feel proud and honored to welcome you all to the 79th Independence Day celebration of our great nation, India. आज़ादी की बुझी आग को फिर से जलाना है। आज़ादी की बुझी आग को फिर से जलाना है। एक बार फिर इनकलाब का नारा लगाना है। दिल में देश के प्रति प्यार को बढ़ाना है। दिल में देश के प्रति प्यार को बढ़ाना है। तुम, मैं और हमारे सभी देशवासियों को एक साथ आना है। तुम, मैं और हमारे सभी देशवासियों को एक साथ आना है। तिरंगा लहराता है शान से, तिरंगा लहराता है शान से, देशभक्ति की महक है इसकी जान में। शहीदों की कुर्बानी की ये पहचान है, शहीदों की कुर्बानी की ये पहचान है। हर हिंदुस्तानी को इस पर आता अभिमान है। With great pride and honor, we welcome our chief guest, Reverend Father Joseph Crasta, among us for today's program. Let's fill our hearts with pride and patriotic feeling as here comes a moment to pay homage to our national flag. So I request our chief guest, Reverend Father, to do the honor and unfold the tricolor. Ram Singh
March past is a procession which signifies the uniformity, order, discipline, and beautiful synchronization of steps. The drum beat rolls, the band strikes up, and a high pitched voice issues commands that synchronized saving of arms, and the sounds of thudding feet stir up spirit of joy. True, there is no lying that a well coordinated march past is a feast to one's eyes and ears. Our students are marching ahead gracefully in their house uniform. St. Paul contingent is led by the head boy Rajveer Singh Rathod, holding the school flag, a symbol of unity and pride, with the motto of our school, way, truth and life, as it leads us in this march past, followed by our head girl Rinku Sahu, deputy head boy Divyansh Jain and deputy head girl Anushka Maheshwari. Here comes the Red House, led by Keshav Ladha and Siddhi Kawar Chundavat. It is the color of love, passion and sacrifice. Red color is also a magical and religious symbol. It also symbolizes desires, power and strength. With hearts of fire and spirits bold, we lead with courage, stories untold. The Yellow House is marching ahead, led by Priyanshu Berwa and Srimita Rathod. Yellow stands for hope, sunshine, happiness, energy and activeness. Yellow color also symbolizes light, confidence and dignity. Shining with joy, bright and true, we spread smiles in all we do. Here comes the Green House, led by Ankur Jain and Priya Yadav. Green is the color of life, nature, renewal and good health. It also symbolizes balance and vitality. Rooted in growth, reaching the skies, in harmony with nature, our dreams rise. Now comes the Blue House, led by Devansh Aswani and Rajlakshmi Kanwar Rathod. Blue stands for stability, trust and confidence. Blue color also represents serenity, inspiration and wisdom. Calm as the seas, wise as the skies, we build trust where friendship lies.
Well done, Paulites. It passes an adorable performance with youthful and telegenic leaders. As our Indian culture speaks, Atithi Devo Bhava. So let us continue the same tradition. And we heartily welcome our chief guest, Reverend Father Joseph Krasta, among us. And we are also happy to have our sisters, Sister Antonia, Sister Rosa, and Sister Nisha. To do the honor, I would like to invite Navya, Arvi, Pehel, and Yogita for Tilak and Garlanda chief guest and sisters. The sacred tilak stands for protection and energy. The tilak mark on the forehead symbolizes blessings and spiritual awakening. With this garland, we wrap our feelings of appreciation and honor. Thank you for gracing this occasion and making it truly special with your presence. सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण व मेरे सभी सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को आज़ादी की 19वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने शहीदों के बलिदान और उनके देश के प्रति प्रेम व समर्पण की भावनाओं को गौरवान्वित व पुनर्जीवित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर हमारे मध्य आदरणीय फादर जोसेफ क्रास्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। Father Joseph was born on 19th November 1979 in the Syrian village of Nampedi amidst the lush greenery of Kasaragod, Kerala. Father Joseph's life began in simplicity and sanctity. Father comes from a family rooted in spiritual grace. His early schooling began at home, but his spirit of inquiry soon led him to St. Anselm's, Ajmer. He studied philosophy at Agra Seminary and later theology at Allahabad Seminary. On 17th May 2011, Father Joseph was ordained a priest. From there, his journey has been one of tireless service. He first served as assistant parish priest and vice principal at St. Paul's, Vallabhnagar from 2011 to 13. Later, from 2013 to 15, he offered his talents to St. Teresa Parish and St. Paul's School, Jodhpur. In 2015, Father Joseph was appointed as principal and parish priest at St. Martin's School, Bhavani Kheda. From 2020 to 2022, he shepherded St. Joseph's Parbatpura, and since July 2022, he served as the dedicated principal of St. Paul's, Vallabhnagar. And recently, he has joined his life's new chapter in St. Paul's, Bijanagar as our beloved principal. Father Joseph is not only a priest or an educator, he is a spiritual guide and a gifted musician. He embodies patience, clarity of purpose, and a servant heart. Now, the most important step of our program, that is to invoke God's blessings to our nation and our school through our soulful prayer. It is a day of immense pride and joy as we remember the historic moment when our country got freedom from the British rule. It is a day to think about our duties and responsibilities as citizens of this great country. Let us pray to build a nation where every citizen can live with dignity, freedom, and opportunity.
Let us uphold the principles of freedom, democracy, and equality. Prayers for our country can be a powerful tool in shaping its destiny and creating a more harmonious and peaceful society. Now, I invite all of you to join in this prayer service for our motherland, India. Stands in need of liberations, my Lord. It still has to feel your power. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have eyes but refuse to see their inhumanity to man. There are those who have ears but refuse to hear the cries of man in agony. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. A reading from the Holy Bible. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. Amen. श्रीमद् भगवत गीता से पाठ। त्वम् अक्षरं परमं वेदित्वयं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनश्च त्वं पुरुषो मतो मे। अर्थात आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत की परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है। जय श्री कृष्ण। जैन धर्म से पाठ। धमो मंगलम मोक्षीटम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमन संति जस्य धमे सयामणो। भावार्थ, जिस व्यक्ति का मन सदा धर्म में लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, अर्थात वह देवों का भी पूजनीय बन जाता है। जय जिनेन्द्र। गुरु ग्रंथ साहिब जी से पाठ। तन धन संपय सुख दियो अरु जिहनि के धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। अर्थ, नानक जी कहते हैं, हे मन सुन, जिस परमात्मा ने तुझे शरीर दिया, धन दिया, जायदाद दी, सुख दिए और सुंदर घर दिए, उस परमात्मा को तू स्मरण क्यों नहीं करता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। A reading from the Holy Quran. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Ubul Watani Minal Iman. Love for one's country is part of faith. Amin. Now, let's offer our prayers in the form of petitions. Your response will be, O Lord, hear us we pray. O Lord, bless our nation. Lord, today we pray for our motherland India. Lord, protect our country from wars, pandemics, and natural disasters, and remove the discrimination based on caste, creed, and religion. May our country experience peace, unity, and harmony. For this, we pray. O Lord, hear us we pray. O Lord, bless our nation. Loving God, we pray for all the leaders of our state and country. Lord, grant them your wisdom and inspiration so that they may lead our nation on the path of truth, justice, and equality. For this, we pray. O Lord, hear us we pray. O Lord, bless our nation. Lord, we pray for all the citizens of our nation. Lord, bless each one of us present here.
Help us to uphold the values of our Constitution. Surround us with your grace and mercy. Give us the strength and courage to fulfill our duties with honor and integrity. For this we pray. O Lord, hear us, we pray. O Lord, bless our nation. Lord, we pray for the youth of our nation who are the future leaders and change makers. May they be guided by your wisdom, compassion, and commitment to justice. May they become responsible citizens to contribute for the progress and prosperity of our nation. For this we pray. O Lord, hear us, we pray. O Lord, bless our nation. Our Father, Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come. thy will be done Thy will be done on earth on earth as it is as it is in heaven. in heaven. Give us this day Give us this day our daily bread our daily bread, and forgive us and forgive us our trespasses our trespasses as we as we forgive those forgive those who trespass who trespass against us. against us. And lead us not And lead us not into temptation, into temptation, but deliver us but deliver us from evil. from evil. Amen. Amen. तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी
Up next, our little Paulites are ready to showcase their energy with a vibrant display of physical fitness and coordination. Welcome to our PT session. ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पीटी डिस्प्ले से जहां हमें आनंद से सरोवर कर रहे हैं, वैसे ही हमें ये प्रेरणा भी दे रहे हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है। इनकी स्फूर्ति हम सब लोगों में भी एक नवीन स्फूर्ति का संचार कर रही है। यह केवल नन्हे मुन्ने बालक नहीं, भारत का भविष्य है, जो आने वाले समय में भारत को एक नया स्वरूप प्रदान करने में समर्थ होंगे और हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ऊंचाई की ओर ले जाकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा कर देंगे। यह विद्यार्थी जो शारीरिक व्यायाम हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, वह हमें एकाग्रता का संदेश भी दे रहे हैं कि एकाग्रता कैसे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक स्वास्थ्य पूर्णतः हमारी एकाग्रता को एक नई दिशा प्रदान करती है। यही विद्यार्थी कल जब विभिन्न प्रकार के ओलंपियाड में जाकर स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे, तो हमारा शीश गर्व से ऊंचा हो जाएगा और माँ भारती स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगी। Step by step in a perfect tune, under the bright August moon, our PTA display salutes the land of heart and disciplined hand. Each move we make, each line we form, echoes the courage that keeps us warm. Today we stand proud and free, marching for India in unity. See the agility, strength, and composure in every moment. It's more than performance, it's discipline in motion. Such rhythm and flexibility. This segment perfectly reflects the inner strength and spirit defining our youth. What an amazing and powerful performance by our little Paulites. Your energy mirrors the resilience of our nation. समुद्र सूख रहे हैं, समुद्र सूख रहे हैं, आंखों में वो रवानी कहाँ। युवा तो बहुत है, पर भगत सिंह जैसी जवानी कहाँ। जो देश के लिए लहू की एक बूंद भी दे दे, जो देश के लिए लहू की एक बूंद भी दे दे, वह राजदेव और सुखदेव वाली कहानी कहाँ। Let's give a warm welcome to our enthusiastic, very young leader who is full of confidence to give a speech on the sacrifices made by our freedom fighters. Please give a big round of applause for Pranusha Mishra.
Reverend Father, Principal, Honorable Chief Guest, Sisters, teachers and all my dear friends. Today is a great day to remember. It is Independence Day. 79 years ago, India got a freedom. St. Paul's Senior Secondary School have gathered here to celebrate and to pay homage to our heroes who have sacrificed their lives for the country. Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, hoisted the flag on 15 August 1947. So, our country celebrates this day everywhere by hosting a flag, march past, patriotic song, speeches, dances and PT displays. India is a motherland. We are all Indians. We love our country. Let us ask God to bless all of us and our country. Jai Hind, Jai Bharat. Well done, little champ. We are immensely impressed by your eloquent and confident speech. Hard work is a two-way street. You get back exactly what you put in it. So, it is the time we acknowledge the talents of our third position academic achievers. I request Reverend Sister Rosa to kindly give away the awards to the General Proficiency Achiever of 2024-25. Now, I request all the third position holders to come upon the stage to receive their prizes. And for further proceedings, I would like to invite Ma'am Anjana. Good morning, everyone. We will begin by inviting the third position holders of each class to grace the stage and receive their mementos. As I call out each name, please come forward to accept your honor. Tanwar Hriday Raj Singh from Nursery Lily on third position. Akshit Tayal from LKG Lily on third position. Dakshita Kaur from UKG Rose on third position. Arpita Chaudhary from UKG Lily. Namaswi Singh Shaktawat from UKG Lily. Yug Totwani from First Rose. Tanishka Chaudhary from First Lily. Havisha Jain from First Jasmine. Lavanya Meena from Second Rose. Divyansh Singh from Second Lily. Kiansh Goyal from Second Jasmine. Kanishka Ramnani from Third Rose. Avya from Third Lily. Arav Aswani from Third Jasmine. Kirti Rathod from Fourth Rose. Devit Mehla from Fourth Lily. Advit Chaudhary from Fourth Jasmine. Ruhani Tirthwani from Fifth Rose. Simardeep Singh Jodha from Fifth Lily.
Ruhi Jain from 5th Lily. Shivangi Soni from 5th Lily. Vida Paul from 5th Jasmine. Kanika Raka from 6th Rose. Mayank Jain from 6th Lily. Bhavya Jeswani from 6th Jasmine. Harshita Jain from 7th Rose. Harsh Jain from 7th Lily. Pratishtha Chaudhary from 9th Rose. Akshara Runwal from 11th Science. Janvi Shekhawat from 11th Arts. Pravjot Kaur from 11th Commerce. Thank you, sister. I request Reverend Fathers, Principal, Reverend Sister Antonia, and Sister to please come for the group photograph. Sister Rusa, Sister Nisha. Thank you, sister. Thank you, ma'am. Congratulations to all the position holders for their achievements. जिनसे देश में रहा चैनो अमन, जिनसे देश में रहा चैनो अमन, जिन्होंने रखा महफूज ये वतन, कर अर्पित यह श्रद्धा सुमन, ऐसे वीर शहीदों को मेरा शत शत नमन, ऐसे वीर शहीदों को मेरा शत शत नमन। तो प्रस्तुत है इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत एक सुंदरतम सामूहिक देशभक्ति गीत।
thank you for your ear-pleasing and melodious song. हमारे देश के प्रति प्रेम, गौरव व स्वतंत्रता दिवस के महत्व का परिचय देने के लिए आ रहे हैं आरोही सोनी व चेष्टा शर्मा। सूरज की पहली किरण भी जहाँ भाईचारा सिखलाती है, प्रकृति खुद आकर रोज जिसका श्रृंगार कर जाती है। मैं ऐसे ही देश का वासी हूँ, हाँ मैं एक भारतवासी हूँ, हाँ मैं एक भारतवासी हूँ। सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सिस्टर्स, टीचर्स और मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आज हम सब यहाँ 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हम सभी ने अनगिनत बलिदानों व त्यागों के बाद स्वतंत्रता से मुक्ति पाई। स्वयं भारतवासियों ने भारतीयों के लिए कानून बनाया, संविधान बनाया, जिसमें जनता के द्वारा व जनता के लिए शासन प्रणाली को अपनाया। हम सभी ने अनगिनत बलिदानों व त्यागों के बाद स्वतंत्रता से मुक्ति पाई। स्वयं भारतवासियों ने भारतीयों के लिए कानून बनाया, संविधान बनाया। परंतु आज के वर्तमान परिवेश में क्या हम सब निश्चिंत होकर यह कह सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से किया है? शायद पूर्ण रूप से नहीं, परंतु क्यों नहीं, जबकि हमारे पूर्वज हमें यह सिखाकर गए थे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती है। भले ही आज हम उस दौर में हैं जहां दुनिया हमारे भारत के झंडे के साथ चलने को ललायत है। आज हम चांद, सूरज से लेकर मंगल तक की यात्रा कर चुके हैं। आज रक्षा के क्षेत्र में या ऊर्जा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम भारतवासियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसलिए संपूर्ण विश्व या यूं कहें संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे भारत को आशा भरी नजरों से बिना पलक झपकाए देख रहा है। परंतु आज हम सभी आपस में धर्म, पंथ, मतांतर व मजहब के कलह में उलझे हुए हैं, जबकि हम सबकी प्रथम प्राथमिकता राष्ट्र होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह राष्ट्र रहेगा तभी तक ये भारत रहेगा और हम सब भारतवासी कहलाने का गौरव प्राप्त करते रहेंगे। अतः हमें आपस में हुए मतभेदों को निकालकर समाज में शिक्षा, चिकित्सा व न्याय की व्यवस्था को उचित बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ, शिक्षित व न्यायप्रिय समाज का निर्माण होगा, क्योंकि एक स्वस्थ समाज ही एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करता है, जो कि नैतिकता पर आधारित है। क्योंकि नैतिकता से संस्कार, संस्कृति, सामाजिकता, मानवता, सद्भावना व आदर भाव बना रहेगा। अतः आज से, अभी से हम सभी यह प्रण ले कि हम हमारे देश व मातृभूमि की संप्रभुता बनाए रखने के लिए संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर अपने प्रत्येक कार्य द्वारा व व्यवहार द्वारा हमारे राष्ट्र की उन्नति में स्वयं का सहयोग दे। इसी के साथ, जिसने सबको मान दिया, जिसने सबको सम्मान से जीने का अधिकार दिया, क्यों मौन है हम सब मजहब की अंगारों से? कौन है वो जिसने भारत माँ को घाव दिया? उठो, चलो और चलते जाओ, मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते जाओ, भारत माँ के घाव भरते जाओ। सोचो हमने भारत माँ को क्या दिया, सोचो हमने भारत माँ को क्या दिया। स्वार्थ, अहंकार
व कलह का कलंक दिया। कैसे हम इस कलंक को धो पाएंगे, कैसे हम भारत को और उन्नत कर पाएंगे। मंजिल को हम अपनी स्वीकार करें, मंजिल को हम अपनी स्वीकार करें आज से ही हम सब अहंकार व स्वार्थ का त्याग करें। बस यही करके हम भारत को और उन्नत कर पाएंगे, बस यही करके हम भारत को और उन्नत कर पाएंगे। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था, फिर से हम इसे विश्व गुरु बनाएंगे। आप सभी को एक पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इन हृदय स्पर्शी शब्दों के लिए, जिसने हम सभी को देश प्रेम और कर्तव्य बोध से भर दिया है। Now it is turn for the second position holders to come upon the stage to receive their prizes. So I would like to call Reverend Sister Antonia to give away prizes and certificates to our position holders. I request Ma'am Pooja to take over the mic for further proceedings. Next, we proudly invite the second position holders of each class to step forward and be recognized for their remarkable achievement. Himanshu Bairwa, Nursery Rose. Amoha Gautam, Nursery Rose. Ritika Jain, Nursery Lily. Gritik Inania, LKG Rose. Divyansh Kishnani, LKG Lily. Manthan Kumar Tirthwani, UKG Rose. Ridhan Mulwani, UKG Lily. Dhanvi Mithani, First Rose. Mokshit Jain, First Lily. Devisha Singh, First Jasmine. Rudrika Kanwar, Second Rose. Vihan Nagori, Second Rose. Kalpit Chaudhary, Second Lily. Divyansh Jain, Second Jasmine. Ayansh Surana, Third Lily. Nab Rustagi, Third Jasmine. Kainat Mangnani, Fourth Rose. Jivika Jain, Fourth Lily. Avya Jain, Fourth Jasmine. Arav Hingad, Fifth Rose. Srishti Jain, Fifth Lily. Lakshit Kumawat, Fifth Jasmine. Avni Jain, Sixth Rose. Akshit Surana, Sixth Lily. Ansh Agarwal, Sixth Jasmine. Atharv Sant,
7th Rose. Bhumi Jain, 7th Lily. Bhakti Mehta, 8th Rose. Rajshri Mundra, 8th Lily. Kashvi Jain, 9th Rose. Yatharth Mangnani, 9th Lily. Yuvraj Singh, 11th Science. Rajveer Singh Rathore, 11th Arts. And Priya Yadav, 11th Commerce. Thank you, sister. I request Reverend Father Principal, Reverend Sister Nisha, and Reverend Sister Rosa to join Sister Antonia and the second position holders for a group photograph. Thank you, Reverend Father. Thank you, sisters. And congratulations to all the position holders. Thank you, sister. Thank you, ma'am. Freedom is not just about living in an independent country. It's about having an independent mind, independent thoughts, and independent actions that contribute positively to the nation with the same feeling in heart. So I request Spriha Mishra to deliver a short speech. Freedom in the mind, faith in the word, and pride in our soul. Good morning to one and all present here. Dear fellow citizen, today is a very proud moment for all of us. We are here to celebrate 79th Independence Day of our nation. We honor the sacrifices of our freedom fighter who fought tirelessly for our rights and liberties. As we mark this significant day, let's renew our commitment to serve our country with dedication and passion. The theme for this year's celebration is Nation First, Always First. Let's prioritize the betterment of our nation, contribute positively in our society, uphold the values, and work towards creating a brighter future for all. We remember the struggle, the hardship, and the triumph that have shaped our nation. Independence is not just a celebration, it's a reminder of our responsibility. We must continue to work towards building a nation that is just, equitable, and prosperous for all. Let's strive to uphold the values of freedom, democracy, and unity that our forefathers fought for. As we move forward, let's harness the power of diversity, our creativity, and our resilience. Let's build a brighter future for ourselves and our future generation. As citizens, it's our responsibility to grasp the opportunity before us as a tribute to those sacrifices. And we promise to work tirelessly, strive for excellence, and contribute to our nation's growth. Finally, I wind up my words by saying that जिसका ताज हिमालय है, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है. With such feelings in our heart, I wish all a very happy Independence Day. We will forever honor our nation's pride with unity and love. Jai Hind, Jai Bharat. Very well said, Spriha. ना सरकार मेरी ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है.
मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। इन्हीं देशभक्ति की खूबसूरत भावनाओं की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के उभरते हुए गायक।
you for this beautiful song which has filled us with patriotic colors. Success is no accident. It is hard work, determination, perseverance, and sacrifices. So now it is the turn to felicitate our first position holders of the academic year 2024-25. So I would like to invite Reverend Father Principal to come upon the stage and bless their hard work. For this, I would like to invite Ma'am Garima for further proceedings. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. A very bright and vibrant morning to each one of you. This is a moment of pride to felicitate the outstanding performers of our school. Yes, the toppers who have shown exceptional academic brilliance, dedication, and perseverance. Let's applaud as I invite them on stage. From Nursery Rose, we have Yuvin Soni, Lakshita Rathor, and Ridhya Agarwal. From Nursery Lily, we have Shivansh Mundra, Tia Chatwani, and Yashasvi Soni. These students have worked hard, set high standards for themselves, and achieved remarkable success. From LKG Rose, we have Ritu Sarkar. From LKG Lily, Shreyanshi Jain. From UKG Rose, Harshad Jain. From UKG Lily, Pravi Kalia. From First Rose, Kashvi Tirthwani. From First Lily, Astha Kathor. From First Jasmine, Dishika Jain. From Second Rose, we have Aradhya Das and Vishesh Vyas. From Second Lily, Sanj Jain. From Second Jasmine, Shreyansh Sharma. From Third Rose, Garvit Methani. Dhravi Jain from Third Lily. Prananjay Singh Chauhan from Fourth Rose. Aradhya Jain from Fourth Lily. From Fourth Jasmine, Parth Raka. Swasti Jain from Fifth Rose. From Fifth Lily, Ekansh Jain. Fifth Jasmine, Yashasvi Sharma. From Sixth Rose, Aradhya Mulwani.
Nivedita Upadhyay from 6th Lily. Bhavi Jain from 6th Jasmine. Vedant Dadij from 7th Rose. From 7th Lily, Tripti Sharma. From 8th Rose, Harsh Jain. From 8th Lily, Nishtha Mangsingha. From 9th Rose, Heman Dhabaria. Sagar Rai Singhani from 9th Lily. Rinku Sahu from 11th Science. Rajlakshmi Kamar Rathor from 11th Arts. And Anushka Maheshwari from 11th Commerce. Dear people, we have 2 more students who secured 3rd position, but they arrived to school late. So here I would like to call their name. I request them to come upon stage. From LKG Rose, Moyansh Meghvanshi. And from First Rose, Priyanshi Jain. Congratulations once again to our toppers. Your achievement is a testament to your hard work and commitment to excellence. But remember, success is achieved and maintained by those who try and keep trying. We wish you continued success in all your future endeavors. May God bless you all. Thank you. Thank you, Father. Thank you, ma'am. We dance for laughter. We dance for tears. We dance for madness. We dance for fears. But today, we dance for a glorious nation. No celebration is complete without a dance. So let's have a beautiful patriotic dance performance. Please welcome them with a huge round of applause. भारत अनोखा राग है सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है ये प्यार का संगीत है ये शांति का गीत है ये एकता का
इस एक तारे पे गूंजे है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, जगा हुआ भारत है ये। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमाची ओढून जाणं खऱ्या सुरांनी गाता है। एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो गाडेचे। जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तु भारत, जय तु भारत, वसुधैव कुटुम्बकं भारतम्। जय तु भारत, ओ जय
मेरा तू ही मेरा मन। बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन। शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण। प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू। युगों युगों से एक छंद साधना का तू। तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण। पवन पवन गगन गगन करे तुझे नमन। जागल हमार भारत है एक। नारी इंडिया बाय बिलोंग। जय तू भारत। जय तू भारत। वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम्। जय तू भारत। जय तू भारत। जय तू भारत। वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम्। जय तू भारत। जय तू भारत। Wow! What a wonderful, marvelous, and commendable dance performance. Let us give them a huge round of applause. On this glorious day of freedom, we welcome our honored guest with the Safa, the crown of respect, symbolizing India's rich tradition, and a bouquet of flowers for a personality full of inspiration. Please accept this as a gesture of our affection and gratitude for your presence. To do the honor, I request Sir GLP to kindly adorn with the Safa as a gesture of our highest respect. And I would like to invite Sir Mahavir to felicitate our chief guest by presenting a beautiful bouquet. Thank you, sir. As we all are excited, I would like to respect Reverend Father to announce the results of today's beautiful March past. Okay, the March past, the results are here. I'll I'll begin with the fourth position. The fourth position goes to Red House. And the third position goes to Blue House. And there are two houses, yellow and green. The first position, second position goes to Green House. And of course, the first position goes to Yellow House. Thank you and God bless you all. Thank you, dear Father. आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की, बची है जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाकर इस कार्यक्रम का समापन करते हैं।
Thank you, everyone. I request all the participants to come on the stage for the photograph.